मैंने ये क्वेश्चन मेरा क्यों आया, ये क्वेश्चन इसलिए आया कि ना मैंने गोरखा का बारे बहुत सुना है, मैंने उनकी स्टोरी सुनी है। मे बी सोशल मीडिया पे जो जो आर्मी फैन फॉलोइंग है वो गोरखा को अलग प्रेजेंट करते हैं। Okay, so now let me speak about Gorkha because I'm a Gorkha. Ah, So the reason why we talk about Gorkha and so much Gorkha regiment and the जो उसकी हम बात करते, see, it is one of the oldest. It is one of the oldest regiments of Indian Army. So you can understand the service, the values, the ethos, and the principle. That is, something to look up to. ये तो हो गई आपकी सिर्फ आर्मी की बात. सेकंड, ही इज अ गुरखा, पहाड़ी. तो एक जो फिजिकल इंड्योरेंस होता है, जो कहते हैं ना कि सख्त सख्त बदन और सख्त खून, वो होता है गुरखास में. इट्स देयर. दैट इज अबाउट फिजिकल इंड्योरेंस. थर्ड, you come about the loyalty, and the loyalty which you see in Gurkha soldiers, okay, is so high. I think that is something that everybody needs to emulate. And जैसे कि मैंने कहा कि हर रेजिमेंट, हर कोर, हर सर्विस, हर कॉम्बैट सपोर्टिंग सर्विस आर्म्स की जो होती है, उनकी अपनी एक स्ट्रेंथ होती है. सो आई थिंक लॉयल्टी एंड द डेडिकेशन विच गुरखाज हैव, दैट इज समथिंग जो सबको सीखना चाहिए, जानना चाहिए, उसके ऊपर कहानियाँ बननी चाहिए. एंड गोरखा इज वन ऑफ द ओनली रेजिमेंट, ऑफ कोर्स आई थिंक, बिकॉज बाकी तो बिहार जाट गढ़वाल राइफल्स अलग हैं. It's the only regiment actually in Indian Army जहाँ पर the officers have to learn the language. sorry, what language they have to learn? Nepali. Okay. गोरखाली सीखनी पड़ती है भाई. Okay, it's mandate. It's mandate. And the best part is, now where Varun is, and Varun, my husband, his boss is a Gurkha officer, and his wife, even his wife speaks Gurkhali. Okay. And she speaks it so well. So, so when you're talking about Gurkha, so I took the liberty because my father was a Gurkha. He was in Gurkhas. My grandfather, my great grandfather, all of them. So that is why I described it a little. But if you want me to pick out the best, that I will not be able to do, and I won't do it. I love you for saying this. Still being a Gurkha, but you, yes, everyone is same. Everyone is same. Is just it is just the media part where people just portray things. Okay, Gurkha, they are like killing. See, it's all about trend ना. जैसे आपको एक चीज़ अच्छी लगती है and आपने उसको सोशल मीडिया पे डाल दिया. फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया, न्यूज़, कहीं पे भी किसी को वो चीज़ अच्छी लगी, उसको ट्रैक्शन मिला, वो चीज़ वायरल हो गई. So now it's a loop. And now in the recent times, why it has come into limelight Gurkhas more is because of Vicky Kaushal's movie over General Sham Manekshaw, so everybody knows it. So that is why.